हम जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं हमें सबसे पहली चीज जो सिखाई जाती है वो है अल्फाबेट्स ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल विच इज द बेसिक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक टू अ चाइल्ड्स अपब्रिंगिंग बट एज वी ग्रो अप एंड एंटर द फाइनेंशियल वर्ल्ड काफी कॉम्प्लेक्स जार्गन और कॉन्सेप्ट्स का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड A is for assets, B is for balance sheet. A can also stand for allocation or asset allocation. To solve this gap from basic to complex, हमने एक brand new series start की है A to Z with Kotak Securities to build a bridge connecting the basics to enhance your knowledge. आज हम एक बहुत ही important concept asset allocation को discuss करेंगे और समझेंगे कि ये होता क्या है. Let's start with a very basic definition to understand what asset allocation means. Asset allocation एक investment strategy है जहां individuals अपने investment portfolio को strategically divide करते हैं between different and diverse asset classes with an aim to balance risk and reward. Now these asset classes broadly fall into three categories: equities, fixed income, and cash and equivalents. अपने पोर्टफोलियो को अलग एसेट क्लासेस में डिवाइड करके इट हेल्प्स द इन्वेस्टर टू लेसन द इंपैक्ट ऑफ रिस्क दैट देयर पोर्टफोलियो इज एक्सपोज्ड टू. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हर एक एसेट क्लास का कोरिलेशन दूसरे एसेट क्लास से अलग होता है. हम इसको थोड़ा डिटेल में आगे समझेंगे, पर उसके पहले ये देखते हैं कि एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है. व्हाई इज एसेट एलोकेशन सो इंपॉर्टेंट? सी, वी लिव इन अ वेरी अनसर्टेन एंड वॉलेटाइल वर्ल्ड. Investment assets are subject to fluctuations and different asset classes move in different directions. When a particular asset class is up, chances are that some other asset class might be down. Historically, major asset classes के returns have not moved up and down at the same time. Market conditions that cause one asset category to do well often cause another category to have average or even poor returns. For example, debt versus equity. Debt और equity के combination के बीच काफी लो कोरिलेशन रहा है. Now let's understand the working of asset allocation with the help of an example. Imagine a local store in your neighborhood that specializes in selling winter products and apparel like jackets, boots, gloves, ice skates. Naturally, it does significant business around the winter season. However, the store tends to do zero business in summertime. So to survive for a living, store manager ने decide किया to expand its range of products. They open a section where they sell all kinds of apparel which could be worn in warmer seasons as well. Starting में store सिर्फ winter के season में profit generate कर पा रहा था. But after diversifying and allocating its products into different seasonal periods, उनका business अब सिर्फ एक ही season पे dependent नहीं है. Asset allocation works on a similar concept. यहाँ risk minimize हो जाता है comparatively with the help of diversification of investments across asset classes. Now, what are the factors affecting asset allocation? कई अलग अलग factors asset allocation strategy को influence कर सकते हैं, like age, time horizon, risk appetite, financial goals, number of people dependent on you, etc. etc. Are more people dependent on you? अगर आप पे कोई और इंसान dependent हो, for example your parents or kids, then there might be relatively more frequent short-term expenses, like say medical expenses. ऐसे सिनारियो में an individual must have sufficient liquidity to meet financial goals and must accordingly plan their asset allocations well in advance. Do you understand your risk profile? Risk profile is an evaluation of an individual's willingness and ability to take risks. ये एक बहुत ही subjective decision होता है and differs from one person to another. It can generally be divided into conservative, moderate and aggressive. हर एक इंसान को अपने रिस्क एपेटाइट का एक आइडिया या एस्टिमेट होना चाहिए बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस. सो इन कंक्लूजन, इन एसेट एलोकेशन देयर इज नो फिक्स्ड रूल ऑन हाउ एन इन्वेस्टर मे इन्वेस्ट. दिस इंटायर कॉन्सेप्ट कैन बी नीटली समड अप बाय द टाइमलेस सेइंग, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.